welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स करीना कपूर खान को कर रहे हैं ट्रोल? नीतू कपूर ने क्या शेयर किया ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर? तैमूर अली खान की अपब्रिंगिंग पर नेटिजन्स ने उठाए सवाल. नेटिजन्स ने किया करीना कपूर खान को ट्रोल फॉर नॉट टीचिंग तैमूर अली खान मैनर्स. क्या इस विजुअल को देखकर आपको भी लगा लिटिल टिम हो गए हैं रूड? सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान की क्यूटनेस और छोटी छोटी हरकतों पर जहां नेटिजन्स जमकर प्यार लुटाते थे, वहीं अब लिटिल टिम का बिहेवियर नेटिजन्स को लगने लगा है एरोगेंट और रूड. और यूजर्स करीना कपूर खान को सोशल मीडिया पर ये कहते हुए स्लैम कर रहे हैं कि उन्होंने तैमूर अली खान को मैनर्स नहीं सिखाए. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, तैमूर इज अ वेरी नॉटी बॉय. आज तक कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन दे शुड टीच दिस किड हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली विद एल्डर्स. द वे ही इज बिहेविंग विद हिज नैनी इज नॉट गुड. I know he's kid, that's why he should learn these things now. Otherwise, Kareena and Saif has to go through the consequences in future. वहीं एक दूसरे यूजर ने करीना कपूर खान को स्लैम करते हुए लिखा, He, eldest son, is turning out rude with all the attention he is getting at such a young age. All thanks to the mother. Psychological aspects of it are the child as he grows up develops attention seekers and when doesn't, gets in a tantrum mode. No wonder Kareena has taught the child with her actions themselves. यही नहीं, कुछ यूजर्स को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि करीना कपूर खान अपने साथ इतनी नैनीज को लेकर क्यों चलती हैं. She said, OMG, how many nannies can she have? And write a book about pregnancy and being a mom. Credit should be given to the nannies. वैसे नेटिजन्स यही नहीं रुके. कुछ को लगा करीना कपूर खान यहाँ एटीट्यूड दे रही हैं, तो कुछ करीना कपूर खान को मास्क ना पहनने के लिए ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने लिखा, एटीट्यूड देख रहे हो मैडम का. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, उसको पता था बाहर मीडिया खड़ी है, इसलिए मास्क के बिना बाहर आ गई, क्योंकि मैडम को फोटो निकाल के भी नहीं निकालने का नाटक करना था. एटीट्यूड बेब. इट सीम्स नेटिजन्स आजकल करीना कपूर खान से खफा हैं. यही वजह है कि वो हर बार अपनी आउटिंग को लेकर ट्रोल हो रही हैं. हाल ही में करीना कपूर खान को इसलिए ट्रोल किया गया था क्योंकि कुछ यूजर्स के मुताबिक करीना कपूर खान ने अपने बेटे जय अली खान को अच्छी तरह से नहीं पकड़ रखा था. वैसे करीना कपूर खान और सैफ अली खान दोनों को ही सोशल मीडिया पर मिलने वाले हेट का अंदाजा लग गया है. यही वजह है कि सैफ अली खान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि करीना कपूर खान ने उनसे कहा है कि वो सोशल मीडिया के कमेंट्स को पढ़ा ही ना करे. सैफ अली खान ने कहा, I don't read it. I am off it and it is really cool because it also helps me focus. It can get addictive, you know. I can Google myself and start checking out what I said when, and then I read something I don't like and it spoils my mood. My wife told me, you know what, just stop doing it. I had stopped for a while and I really started saying, what do I do? Well, बेबो भी कह चुकी है कि वो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेती हैं. मैम यहाँ पे मैम सेंटर मैम ये मैम करके बोलो ना. यार क्या मैम यहाँ पे देखिए मैम. बहुत मैम. उर्फी जावेद ने कहा, पब्लिसिटी चाहिए होती तो एयरपोर्ट बिना कपड़ों के जाती. उर्फी जावेद ने अपने इन कपड़ों की वजह से हुई ट्रोलिंग का दिया जवाब. उर्फी जावेद ने दिया सिग्नल, ये तो अभी टीजर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है. बिग बॉस OTT से लाइमलाइट में आई उर्फी जावेद ने अपने क्रॉप्ड डेनिम जैकेट लुक से सोशल मीडिया पर स्टॉर्म ला दिया था.
उर्फी जावेद पर नेटिजन्स का आरोप था कि वो पब्लिसिटी के लिए ऐसे अश्लील कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर आई हैं। लेकिन अब खुद पर लग रहे पब्लिसिटी के एलिगेशन पर उर्फी जावेद का कहना है, अगर पब्लिसिटी चाहिए होती तो एयरपोर्ट में बिना कपड़ों के जाती। It's just who I am and if that creates publicity, then good for me। यानी उर्फी जावेद के लिए any publicity is good publicity। और उर्फी जावेद का साफ कहना है कि वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं और उन्हें ट्रोलिंग बॉदर नहीं करती। Initially, I used to wonder whether I was at fault for putting up something, but now I don't feel that way anymore। I have grown a thick skin, I think, and these things don't bother me now। यही नहीं, उर्फी जावेद ने अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद अपनी बिकिनी पिक को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्रोल्स को जवाब देने की कोशिश की है। It seems उर्फी जावेद ट्रोल्स को टीज कर रही हैं और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, There is so much more to me than my clothes। Why don't people talk about me as an individual? I have realized that no matter what I post, people will say things, be it a bikini or a salwar suit। There are nasty comments always। उर्फी जावेद का ये भी कहना है कि वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं। इसके बावजूद कपड़े कभी भी उनके लिए एक बड़ा इशू नहीं थे। ऐसे में उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता लोग उनके कपड़ों के बारे में क्या कह रहे हैं। I have grown up in a conservative family in Lucknow, but even then our clothing was never an issue। Today when I wear outfits which I love, I feel good and don't care about what people say। I get inspired from various places and then I get my clothes made। यानी उर्फी जावेद ने दे दिया है सिग्नल कि उनके कपड़ों के लिए उन्हें कितना भी ट्रोल क्यों ना किया जाए। She is going to wear what she loves। ऋषि कपूर की कौन सी दो ख्वाहिशें रह गई थी अधूरी? रणबीर कपूर क्या अपने डैड की उन दो अधूरी ख्वाहिशों को जल्द करेंगे पूरा? रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की इन दोनों ख्वाहिशों के बारे में फैंस को बताया। ऋषि कपूर की 69th बर्थ एनिवर्सरी को नीतू कपूर और उनके कुछ करीबियों ने मिलकर किया खास तरह से सेलिब्रेट। चिंटू जी की फेवरेट चीजों पर बेस्ड इस स्पेशल केक को कट करके उनकी 69th बर्थ एनिवर्सरी को किया गया सेलिब्रेट। और इस स्पेशल ओकेजन में डेविड धवन, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके कुछ करीबी शामिल हुए, जिसकी एक खास झलक नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। साथ ही नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की दो अधूरी ख्वाहिशों के बारे में मीडिया को बताया। नीतू कपूर ने बताया कैसे ऋषि कपूर का सपना था कि वो अपने बेटे रणबीर कपूर को घोड़ी पर चढ़ता देखें विद ट्रेडिशनल आउटफिट, और उनका दूसरा सपना था पाली हिल पर कृष्णराज बंगलो को कंप्लीट होते हुए देखना। लेकिन ऋषि कपूर सैडली अपनी इन दोनों ख्वाहिशों को पूरा करने से पहले ही चल बसे। लेकिन ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर बहुत जल्द उनकी इन दोनों ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो जहां अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी करने की तैयारी में हैं, वहीं रणबीर कपूर अपनी मॉम नीतू कपूर और आलिया भट्ट के साथ मिलकर कृष्णराज बंगलो के रीडेवलपमेंट का काम भी देख रहे हैं। यानी ऋषि कपूर के नेक्स्ट बर्थडे तक रणबीर कपूर अपने डैड की दोनों अधूरी विशेस को पूरा कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ऋषि कपूर की 69th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर जब नीतू कपूर से पूछा गया कि ऋषि कपूर अपने 69th बर्थडे पर क्या करते, तो इस पर नीतू कपूर ने कहा, "Oh, I'm sure he'd get himself a new suit like he always did, and he'd take 2 hours to get ready, while I just took an hour at most। He was very fond of clothes of all colors, even yellow, purple, green and gold, because he could carry them off। I don't know how many suits and jackets are still there in his wardrobe unworn with the price tags on, and he was crazy about shoes too, of all colors again। वहीं ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऋषि जी की लास्ट फिल्म शर्मा जी नमकीन के फर्स्ट लुक को अनवेल किया गया, जिसे ऋषि कपूर की डॉटर रिद्धिमा कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस फिल्म के पोस्टर की खास बात है कि ऋषि कपूर के साथ साथ फिल्म के पोस्टर में ठीक उन्हीं के लुक में परेश रावल भी नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें, ऋषि कपूर की डिमाइस के बाद परेश रावल ने इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया था। वैसे रिद्धिमा कपूर के सोशल मीडिया पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने रिएक्ट किया, लेकिन आलिया भट्ट का ये मिस यू कमेंट फैंस को काफी पसंद आया। ऋषि कपूर अपने फैंस के दिलों पर राज करते थे। यही वजह है कि उनकी डिमाइस के बाद भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सबने मिलकर बना दिया सुपर स्पेशल। क्या करण जौहर को अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र में लगे पैसे डूबने का लग रहा है डर? क्या करण जौहर है खौफ में कि उनके मोर देन 300 करोड़ के सपने पर ना फिर जाए पानी? क्या करण जौहर ने इस फिल्म के लॉसेस से बचने के लिए करवाया फिल्म का इंश्योरेंस? करण जौहर ने डायरेक्टर अयान मुखर्जी, एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ मिलकर इंडिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइज को बनाने का सपना देखा था और इस सपने की शुरुआत 2018 में हो गई थी। लेकिन पहले फिल्म के हेवी वीएफएक्स वर्क की वजह से फिल्म डिले हुई। फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट की खराब तबीयत और पैंडेमिक की वजह से ये फिल्म बार बार होल्ड पर जाती रही। यही वजह है कि रिपोर्ट्स आई थी कि करण जौहर ने एक स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म का 400 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है। पर क्या ये न्यूज है पूरी तरह से सच? एक वेब पोर्टल की माने तो करण जौहर ने इन रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया है। यानी करण जौहर को अपने इस प्रोजेक्ट पर है भरोसा और फिलहाल के लिए वो नहीं है इन पैनिक मोड, क्योंकि इंश्योरेंस की न्यूज आने के बाद लोगों को लगने लगा था कहीं करण जौहर को ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनकी फिल्म में लगे करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि अब करण जौहर की ये फिल्म ऑलमोस्ट रेडी है और अब सिचुएशन नॉर्मल होते ही इस फिल्म की रिलीज की अनाउंसमेंट हो सकती है। वैसे करण जौहर अब खुद एक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कर चुके हैं। वैसे करण जौहर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्पेशल वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें वो अपने डैड यश जौहर को याद करते नजर आ रहे हैं। करण जौहर अपने डैड यश जौहर के काफी करीब थे एंड ही नेवर मिसेस एनी चांस टू पे हिज ट्रिब्यूट टू हिज डैड। Coming up on the show, Konkona Sen Sharma ने किया Zoom से exclusively interact. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speakeasy. I have a very talented actor with us today who makes sure her work goes beyond what she's doing and excels every time she comes on screen. I'm talking about the very talented Konkona Sen Sharma. Thank you for joining in. Thanks, Rudrani. Every time someone talks to you, they definitely talk about, oh my God, look at your body of work, look at this. And I know you try to not think about all of that because as an actor, you just want to continue looking at what's ahead of you. But do you really feel that kind of affects you adversely at times? Adversely in the sense, like, besides making you awkward, do you think sometimes it gets like a little tense? No, I mean, it does make me a little awkward, that's true. But beyond that, no, not really. I actually don't pay too much attention. People are very nice. People are very kind. They all say very nice things. Very rarely do people give me very honest feedback, you know. So, and it's okay. I mean, it's not like I need to know everybody's opinion. Everybody's free to think whatever they want to think. My own opinion matters a lot to me, you know, what I think about something. Or I have a trusted circle, you know, my mother or, you know, a few trusted friends whose opinion I seek. And beyond that, I try not to pay too much attention to too much praise or too much criticism. Which is a good way to look at things. Best, what to do. For an actor like you, who always makes sure that she is pushing herself a little more when she's choosing her projects or whenever you have any kind of collaboration, does it bother you with the kind of rules and regulations that people are putting in nowadays when it comes to digital mandates, when it comes to how shows should be like? And as an artist, how does that affect you? It really irritates me, because I really don't believe in censorship. The best thing about OTT platforms was that there was no censorship. And now that is changing. You know, I think we had such diverse content because we've not had censorship, you know. And look at it. We are,
we vote for our leaders. We vote at 18, right? And why can't we choose our own content? That is something which really bothers me, because I don't believe in having these kind of restrictions. I think that free speech is very important. As an artist, and I know you're pretty brave, not just in the choices that you make. Otherwise, does it sometimes though bother you or the people around you when you speak your mind? Does it scare them, if not you? I hardly speak my mind as much as I could. I don't feel I'm very brave. I feel like a coward on most days. I was fascinated by the entire concept of Mumbai Diaries 2611. There have been so many versions of retelling of the most horrifying events that every person in this country probably has their own memories associated. But I find this retelling very fascinating, is because I never thought that it would be told from the perspective of the people who are also saving lives, were yet not given that attention. Or did you find this take something that we would have never thought would have come out? I think that it's really sad that we need something like a COVID or a pandemic for us to truly appreciate the frontline workers that we have. Yeah. And that is true for everyone, including myself. Because we've all been through this 2611 experience. It's in a part of our collective consciousness. We know what happened. We know the outcome. We are aware. We have lived through it. We've spoken to people who've been through these experiences. We've heard countless retellings, but we never saw it from the point of view of the medical community. We've never really seen it from that perspective, and it is not an easy job at all to be a first responder in any situation, whether it's the cops, whether it's the fire brigade, whether it's the doctors, the paramedics. It's not an easy job, and they also have their personal lives. They also have their own issues. They're sometimes in this show, they're working in a government hospital, which has its own limitations, of course, even in a big city like Mumbai. So I really like the fact that the entire setting is within a government hospital. Of course, we do cut to the hotel as well. We do show that. We do show the different worlds that collide. The patients who come there, the doctors, the nurses, the ward boys, the administrative staff, the media who's covering it, the police officers who have come in, but it is a hospital under siege. It's something we've not seen before. Actually, medical dramas is something we don't really make. I don't think I can recall medical dramas in India as such. So it was a very new, fresh perspective for me. I really enjoyed, working, in this kind of a setup and learning more about, this kind of a context. And I hope that, that after COVID especially, we will have a newfound appreciation and respect for our frontline workers. This is really a tribute to them. This is a fictionalized account of 2611. Yeah. It's not, it's not documentary, so it's not exactly analyzing and taking those events apart and, all of that. It is a fictionalized account. We did do a fair amount of research. I would say that Nikhil and his team did a lot of extensive research, which they shared with us. They have, I think, sometimes you have to do, so I'm not playing any real person. Mine is a fictitious character as well. I'm playing Chitra Das, and she's the social services director in this government hospital. She's not from a medical background. She has a medical background, but she's not a doctor. She's not a doctor, but you know what happens in times of crisis? I mean, everybody goes outside the line of duty, and everybody is, doing things outside necessarily what they are trained to do, which also happens here. One doesn't always have to do the research for every single role. More or less, I've seen that, when I'm playing a character who's very removed from me, whose reality is very removed from me, geographically, culturally, economically, socially, then you have to do a lot of research. For example, in Omkara, where I'm playing a rural woman who speaks in a UP dialect, then you may need to do a lot more research. But here what happens is, Chitra Das is not that removed from me. So in that sense, I didn't have to do a lot of research just for her character. Also, it's not a character drama, Sure. So that's not the genre. But I think to a certain extent, we all had to, seem, adept at, working in a hospital. So what Nikhil and his team had organized is a medical workshop for all of us. He had, which was a wonderful thing because, all of us are actors, but none of us are doctors. So it was a great leveler, and it was an even playing field. So even though some of us are established and some of us are upcoming in terms of the, artists, we all had to learn something new. We all had to do this medical workshop, and there we met Dr. Sheikh, who trained us, and he was somebody who was actually personally on ground during 2611. So he shared his stories. He told us, and he was also teaching us things like, how to do sutures, the medical jargon, how to hold the equipment, and all of that. And that was
part of our prep and part of our research, other than table reads and rehearsals and all of that. And that I think really helped us. And it was a fun thing to do. It was a great bonding for all, this group of actors, this motley group of actors to all get to know each other as well. So it's a lot of our research was based, around things like that. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.